जी बिजनेस के दर्शकों को नमस्कार। मोदी गवर्नमेंट के 3 साल पूरे हो रहे हैं और देश का सबसे बड़ा रिफॉर्म जीएसटी भी इम्प्लाई हो जाएगा। और यहां से लेकर हाउसिंग सेक्टर के आउटलुक के बारे में आइए हम सीधे बात कर लेते हैं केके मिस्त्री, वाइस चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ HDFC लिमिटेड। गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के जो 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं और यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन और मैक्रो लेवल पर जो सिचुएशन है उसको आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं? इफ़ यू कैन जस्ट बिगिन विथ। मेरे हिसाब से इंडिया की जो अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, in all these 35 years that I've been following the economy, I don't think we've been as strongly positioned or as strongly poised as we are at this point of time. अब हर एक जो डेटा देखने जाएं, we are at our best. Current account deficit completely under control, fiscal deficit under control, inflation has come down. कितने inflation तो इंडिया में 11-12% था at peak at some point. Today inflation has been significantly controlled. Currency, India has been one of the strongest currencies in recent times. जो अभी आप recently देखेंगे, the rupee has appreciated against the dollar. RBI has built up so much of reserves. तो जो macro economic data है, that is fantastic. बहुत अच्छा है. It is really very, very good. And India is poised to be amongst the most significant economic countries in the next 10 years, along with China, along with US. So जो macro data है, वो it's fantastic. I think the 3 years of the Modi government have been fantastic. There are so many initiatives, so many initiatives that the government has taken in the course of these 3 years to take India forward. जैसे आपने मैक्रो नंबर्स के बारे में बताया और यहाँ पे ग्लोबल वर्सेस द ग्लोबल स्टैंड्स ऑफ इंडिया हैज इम्प्रूव्ड, बट ग्राउंड लेवल पर सर थिंग्स आर नॉट टेकिंग ऑफ। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो एक्चुअली जिसका जो क्रेडिट ऑफटेक जैसा बढ़ना चाहिए था, वैसे वो सेक्टर में हम नहीं देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से क्या हुआ है कि ओवर द ईयर्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होती गई। जो कैपेसिटीज़ कंपनीज़ ने बिल की थी, आई एम टॉकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो कैपेसिटीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने बिल की थी, दोज कैपेसिटीज़ आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। राइट। हिस्टोरिकली देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ environmental issues in the past and so on and so forth, because of which projects have got delayed. Those delayed projects have resulted in lot of that is caused the NPA problem in the banking system. अभी जो कैपेसिटी जो बैंक मैन्युफैक्चरर्स ने क्रिएट की हुई है, partly because of the global slowdown and the fact that the global markets have been very unconducive. Steel prices up dipped. China was dumping steel for such a long period of time. So because of those reasons, Indian companies have not been utilizing their manufacturing capacity to the hilt. As economic environment gets better and better, my sense is consumption in the economy will increase. As consumption increases, capacity utilization will keep going higher. अभी अगर आप मैन्युफैक्चरर है और आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट कैपेसिटी, तो फिर व्हाई विल यू वांट टू build a fresh capacity and borrow money and do that? So you will wait for a while till your capacity utilization goes higher. So the most important thing in my view is to get capacity utilization in industry to increase, which is then a function of a more favorable macro global environment. The global environment is also getting better, as you see, which will certainly help. And number 2, the fact that consumption in India will get better. So consumption when do you expect improves, it to happen? I would say over the next 12 to 18 months, I would certainly expect that is not too far. That consumption is not very far. I certainly believe it's not very far. Moving on, सर एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल। थिंग्स कितनी चेंज हो रही है सर, और आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मेरे हिसाब से तो बहुत चेंज हो रही है। इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने ली हुई है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव्स, बट जो लेटेस्ट जो CLSS की जो इनिशिएटिव है, व्हिच इज दिस सब्सिडी स्कीम दैट द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, मेरे हिसाब से दैट इज समथिंग व्हिच बेनिफिट्स द कॉमन मैन. It benefits not just the very poor, it also benefits the middle class. और बहुत बड़ी initiative है. If you are to just tell you, there are 3 schemes, one applicable to the lower middle class, one and 2 applicable to the middle class. अभी जो middle class की जो higher middle class की जो scheme है, इसमें the scheme says that if you do not own a property at the time of availing of a loan, number 1 condition, number 2 your income is less than 1,50,000 a month, यानी कि 1.5 लाख से कम महीने की इनकम होनी चाहिए, 18 लाख की साल की इनकम होनी चाहिए. एंड थर्ड इज जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी एरिया 110 स्क्वायर मीटर से कम होनी चाहिए. अगर ये 3 कंडीशन से सेटिस्फाई होती है, देन ऑन एनी लोन दैट यू टेक अप टू 12 लाख रुपीज़ ऑफ द लोन पे आपको गवर्नमेंट 3% सब्सिडी देगी, एंड दैट सब्सिडी इज़ फॉर द लाइफ ऑफ द लोन, एंड वो फुल लाइफ टाइम लोन डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी.
So it is a huge benefit because इससे property price कम होती है. जो consumer है उसका जो cost होता है when he is going to buy a house, that cost comes down. In my view, interest rates have bottomed out. Interest rates और कम होने के chances काफ़ी कम है. Property prices have not increased in the last 2-3 years, and this is a further benefit that the government has given. So according to me, housing ke liye, this is the best time. It's the best time to buy a house. The scheme that the government has done, apart from helping the common man to buy a house, the more important thing is it will kickstart economic growth. Sure. Because if you see construction as a sector, construction is the second largest employment generator in the country. Cement industry, steel industry, paint, all these industries are dependent on the housing sector. Right. It creates so many jobs, plumbers, carpenters, masons, so on and so forth. So जो housing को जो initiative, incentive मिली, and if housing picks up, construction picks up, then all these core sectors in the economy get a growth, which then creates jobs, number one, and number two, those jobs lead to more income, and income leads to consumption. Okay. And consumption will lead to your question, which is higher capacity utilization, which will then lead to investment. Moving on, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें सर, और यहाँ पर मोदी सरकार के 3 साल के अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, रिसेंटली दे हैव कम आउट विद एन एनपी ऑर्डिनेंस और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो ऑर्डिनेंस के ऊपर जो गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया हुआ है, आपको क्या लगता है कि कितना सक्षम रहेगा ये सेक्टर को बूस्ट करने के लिए या फिर हम कहें डिस्ट्रेस करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि जो एनपीएस की जो प्रॉब्लम है, ये कोई 1 साल 2 साल की प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज अ प्रॉब्लम विच हैज बीन देयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इन द न्यू सिस्टम, इन द न्यू रेगुलेटरी regime, we are recognizing loans as NPLs which 10 years ago would never have been even shown as NPLs. So you have to look at it from that context. One should not look at it कभी फिगर इतना है, 10 साल फिगर इतना था तो इतना बढ़ गया. It is not correct. In reality, if you keep the same basis of looking at it, things have not got any worse than what they were in the past. अभी एनपीए का एक ही जो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हिस्टोरिकली डिलेज हुए हैं फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, और वो डिलेज के लिए कैश फ्लोज अफेक्ट हो गए. तो जो लोन ली हुई है, तो लोन दैट द प्रोजेक्ट हैज टेकन, इंटरेस्ट ऑन दैट लोन हैज माउंटेड. Interest has got capitalized and the interest has mounted. So the loan amount has got ballooned beyond what was originally envisaged. Some of these projects में banks को थोड़ा haircut शायद लेना पड़ेगा. अभी haircut 10% हो सकता है, 20% हो सकता है. That depends project to project. इसके लिए banks, in my view, the bank must have the confidence कि once they've taken that decision, 5 years later, no one should question that decision and say, why did you let go 10%, 20%? इतना जो confidence आ गया है ना बैंकिंग सिस्टम में, तो मेरे हिसाब से काफ़ी एनपीए प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे. जैसे हम रिफॉर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया था और उसका काफ़ी सी थ्रू प्रोसेस भी हमने देखा हुआ है, और उसके बाद से हमने लेंडिंग रेट्स भी गिरते हुए भी देखे हुए हैं. व्हाट डू यू थिंक गोइंग फॉरवर्ड, विल द लेंडिंग रेट्स फॉल फर्दर? बिकॉज आरबीआई का स्टांस तो यहाँ पे कुछ और सजेस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू यू. देखिए, मेरे हिसाब से आप डिमोनेटाइजेशन की अलग बात है, लेंडिंग रेट्स की अलग बात है. सो let me talk of demonetization first and we'll talk of lending rates. According to me, and I said this even when demonetization happened in November and December, that there will be a temporary slowdown, but in the medium to long term it will be massively beneficial to the economy, and that's what we are seeing today. I think demonetization has been a phenomenal success for 3-4 reasons. Firstly, there has been some transmission of wealth from the rich to the poor. So जो गरीब आदमी के पास जो line, he stood in the line, he's made some money. Now in the process, he's now has more money than he had in the past. A poor man will consume more than what a rich man would consume. Right. So उसके पास जो थोड़े बहुत भी पैसे extra आ गए, he will spend that money. So consumption economy में pick up कर सकता है. It's a big benefit. That will create, as I said earlier, faster, consumption will lead to faster capacity utilization and faster pick up in the investment cycle. Second benefit है कि काफ़ी लोग ने, many people have gone and deposited a lot of cash into their bank accounts. So the income tax department now has a record of all those hundreds of thousands of people who are not paying tax in the past and suddenly found themselves with lots of money जो उन्होंने banks में deposit किए हुए हैं. So they can now go after these people, find out why they have not paid taxes and significantly improve the tax to GDP ratio in India. आप
देखते हैं तो आज today itself we'll see that the tax base has widened significantly, exactly, yes. which is the most important benefit. And third thing is there is money lying at home. अब घर पे पैसा हर एक जन के पास थोड़ा बहुत पैसा था. They've gone and deposited the money in the bank. Now from the banking system, that money has gone to lower interest rates, number one, and number two, it is going from there into financial assets. Right. So it is going into the bond market, which has brought bond rates lower. It is going into the stock market, which has taken stock markets higher. It has gone into financial assets, which are productive assets. Right, so जो unproductive asset, जो physical cash में जो पैसा था, that money has now moved to productive assets. So I think on the whole, it's been a great success. सर, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर देयर इज अ चांस ऑफ इंडिया आउट परफॉर्मिंग फ्रॉम ईयर ऑन, बट एक ऐसा सेगमेंट है दैट इज नॉट बिन परफॉर्मिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉब क्रिएशंस. ग्राउंड लेवल पर काफ़ी एक्टिविटी हो रही है. टॉकिंग अबाउट मैक्रो नंबर्स, जैसे आपने बताया कि कंजम्पशन विल इंप्रूव और यहाँ पे लेकर देन द कैपेक्स थिंग्स विल ऑल्सो इंप्रूव फ्रॉम ईयर ऑन. बट सर, एक जॉब क्रिएशन को लेकर व्हाट डू यू थिंक सो, इंडियन इकोनॉमी को कैसा परफॉर्म करना पड़ेगा टू होपफुली क्रिएट मोर जॉब्स फ्रॉम ईयर ऑन? See, jobs get generated in 3-4 sectors. Jobs get generated in agriculture, right. Jobs get generated in construction, jobs get generated in manufacturing, and jobs get generated in services. अभी services जो है वो उसका काफ़ी global impact होता है. तो US में क्या होता है, IT, what happens to the IT sector, what happens to pharma sector, वो सब a lot of that is globally dependent. इंडिया में जो डिपेंडेंट है, जो there are two things, forget एग्रीकल्चर पे तो हमेशा फोकस है, इज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आपको पहले बताया कि द इनिशिएटिव दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू प्रमोट हाउसिंग, आई थिंक दैट इज़ अ मैसिव इनिशिएटिव बिकॉज इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ जॉब्स. अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखने को गए तो कंस्ट्रक्शन रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ जॉब्स गेटिंग क्रिएटेड. प्लम्बर्स, मेसन्स, कारपेंटर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सीमेंट कंपनीज, स्टील कंपनीज, पेंट कंपनीज, सो मेनी एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो हाउसिंग पे डिपेंडेंट है. तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रो करने से जॉब्स डेफिनेटली क्रिएट हो जाएंगे. एंड देन for a period of time, as the new jobs that have been created result in more consumption, that consumption will lead to higher capacity utilization, which in turn will lead to a pickup in the capex cycle, which in turn will lead to manufacturing and therefore more job creation. जैसे आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से लिंक किया, ऐसा पार्ट है that has hit a roadblock. If you can just highlight that about the acquisition of land as well as यहाँ पे लेबर लॉस पर काफ़ी टाइम से मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इस पर आपका क्या व्यू है? See, labor laws तो अभी मेरे हिसाब से कुछ labor laws are not as bad or as difficult as one would people make it out to be. Land पे yes issue है. Land जो अगर more easily available है, it's a very complex subject. I don't think we can discuss such a complex subject in a 5-minute conversation. But yes, if a way is found to make land cheaper in some form, then I think that will go a long way in making housing even more cheaper to the consumer, to the home buyer. श्योर, वी आर टॉकिंग अबाउट जीएसटी. देश का सबसे बड़ा रिफॉर्म भी अभी जुलाई 1 से अभी लागू हो जाएगा. जैसे हम इनिशियली बात कर रहे थे, इट्स सॉर्ट ऑफ एन इन्फ्लेशनरी इनिशियली, बट उसके बहुत फायदे भी हैं. लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे हैं. तो आप जीएसटी के ऊपर कैसे कर रहे हो और इंडस्ट्री कितना प्रिपेयर्ड है सर इसको एब्जॉर्ब करने के लिए? मेरे हिसाब से तो अभी इंडस्ट्री हैज हैड इनफ टाइम टू वर्क ऑन इट. एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत है, खास करके सर्विसेज सेक्टर के लिए, पर अभी जीएसटी की रेट्स आई हुई नहीं है. सो विदाउट नोइंग द रेट्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन व्हाट impact GST will have, but certainly over a period of a year or two it will significantly improve the tax base and result in whatever थोड़ा बहुत जो evasion हो रहा था indirect taxes में, that would go away with GST. Despite good numbers, we have seen numbers improving of India. Ground level पर भी काम काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है. GST भी अभी जैसे they were asking about the GST implementation, वो भी उसका भी रास्ता भी साफ हो गया है. But यहाँ पर we have not seen an upgrade of sovereign ratings of India. I think we should leave the rating aside. We are on a strong footing. We understand we are in a strong footing. I'm sure the rating agencies understand we are in a strong footing, but they want to see the numbers. Until they've seen the numbers, probably they will not increase the rating. Isn't it a dual standard? I think it's a matter of time. All right. I think it's a matter of time. So we're talking about efforts from RBI and steps from RBI, but RBI का जो stance है वो थोड़ा hawkish है. So what do you expect? और यहाँ पे लेकर आपकी क्या opinion है इस पर about the rates? See, मेरे हिसाब से any central bank anywhere in the world has to be very careful about inflation.
इन्फ्लेशन की इतनी नेगेटिव इफेक्ट्स है, इफ इन्फ्लेशन वाज टू इंक्रीज, दैट आरबीआई हैज टू take every measure possible to make sure that inflation is kept under check. If you go back to 3 years ago, 4 years ago, inflation in India, consumer inflation had touched double digit. अभी जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन हुआ था उस टाइम एवरीथिंग इन द इकोनॉमी गोज फॉर अ टॉस. Currency depreciates, current account deficit goes for, gets impacted, fiscal deficit gets impacted, consumption gets impacted, the entire economy gets impacted. Right. And then to pull back inflation and bring it lower cannot be done in 1 month or 2 months. Once inflation goes up, it takes a very, very long time for RBI to bring inflation down. It takes more than a year, 2 years to bring it down. And in that 1-2 years, we have to live with very, very high interest rates. So RBI has to do everything possible to make sure that inflation doesn't suddenly spike. Right. And therefore, RBI will always keep a cautious stance. Right. If you look at the broad economy today, everything in the economy is looking fantastic. Right. But at the same time, you must bear in mind 2 or 3 things. One is that a lot of the inflation is food related. Food inflation is dependent on monsoons. A lot of the food production is dependent on monsoons. Agar monsoon by chance, God forbid, itna acha nahi aaya by chance, so that has an impact on inflation. RBI cannot let the economy go, cannot keep lowering rates. They will wait for the monsoons to actually. They will wait for the monsoons to get over. Sure. That's one thing they have to see. Right. Secondly, they have to see global events. They have to see what is happening to global commodity prices, what is happening to oil prices. At this moment, that looks relatively benign. To उसमें तो कोई risk नहीं है. Right. But theoretically, if oil was to go from 50 to 90, it's not going to go. It will not go. Right. But theoretically, if it goes from 50 to 90, suddenly it fuels inflation. Flows भी अच्छे हैं sir. And thirdly, most importantly, RBI has to look at what US is doing, US Fed is doing. Right. Because a lot of the flows that you are talking about, a lot of those flows are coming from the US. Will it sustain? I think it will sustain. Right. But if you have a situation where US is increasing rates, right, which US is doing, right, and India is seen at the same time to be reducing rates, then the gap in the interest rates between the two countries narrows. Then that will create it will make it less attractive for foreign money to come into India. Right. And in fact, some of the money can go away. Right. And if that were to happen, it puts pressure on the currency. Pressure on the currency leads to inflation and all the negatives that we see. So I think RBI will keep a cautious approach. I don't see them increasing interest rates, right, but I don't see too much scope for interest rates to come down. Finance sector, जो finance sector है सर, आपको क्या लगता है कि कौन से sector से growth going forward आएगी? I'm talking about housing, we're talking about white goods, maybe auto or some of the other segment. कौन सा segment will do well going forward? मेरे हिसाब से housing of course will do well because of all the initiatives that the government has taken for the housing sector. Consumption in the economy will pick up. So if consumption in the economy picks up, then all the core sectors which are consumption related, right, will also get the boost. And over a period of time, as manufacturing picks up, then obviously those sectors also get a benefit, but that will come with a lag. So moving on, one last question before I let you go, sir. यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट के जो 3 साल का जो एफर्ट है, टॉप 3 चीज़ें जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे एंड टॉप 3 एफर्ट्स जो और आने की ज़रूरत है जिससे इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा. If you can just highlight that. Okay, I think the top 3 efforts or top 3 achievements, there are many achievements. Off the cuff, recall what would be the top 3. I would say housing, the initiative on housing. Okay. It's a big initiative because it is going to help the common man, and it is going to result in a pickup in industrial growth. Second, I would rate demonetization. Because of the various reasons I mentioned earlier, some transfer of wealth from rich to poor, higher tax base in future, movement of illiquid assets into financial assets and stuff like that. So that, according to me, would be the second initiative. Third is digitization. जो initiative है digitization पे, startups पे, all of that is encouraging the common man, the younger entrepreneur to sort of make his way in life. कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से गोइंग फॉरवर्ड? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने 3 साल में इतना किया है कि they've done a lot. They've really done a lot. What one would have expected them to do in probably 2 terms, they've done in 3 years. So अभी कितना क्या बाकी है? I think my personal view is we have to lower tax rates. अगर आप tax rates lower करेंगे, right, you will automatically get wider. You'll automatically increase the tax base. Right. So we have to figure out a mechanism of reducing the maximum marginal tax rate. अगर आप maximum marginal tax rates कम करेंगे, revenue पे कुछ इतना असर नहीं आएगा, right, but you will significantly widen the tax base because थोड़ा बहुत भी जो अभी भी जो
concealment hoti hai income ki, that initiative goes, that incentive to conceal goes away if the tax rate is low. I would say that is one initiative that the government needs to think. This is something I can think off the cuff. श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी इज वेल पॉइज्ड टू टेक अ लीप फ्रॉम हियर ऑन, बट देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच वी हैव टू टेक इट वेरी सक्सेसफुली, और वो अगर हमने किया तो रेटिंग एजेंसीज का अपग्रेड भी बहुत जल्दी आ जाएगा। 100% आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर।